एक्सरसाइज थी इसकी लास्ट उसकी लाइट और लाइटेस्ट उसमें। अच्छा उसमें अब एक वर्ड था ये 32 32 सताजेदूनी। जी इसको अब हमने किया है नॉर्मल, जी क्योंकि उनमें सताजेदू और फिर नी इज सेपरेट। बिल्कुल सही है, सताजेदू और फिर नी। हम यही बिल्कुल पूछ सही रहे है। थे कि लाइक कुछ चीजों का ये भी हो सकता है कि चेंज हो जाए अगर आगे कॉन्टेक्स्ट देखना है उसकी बेस पे कुछ। जी ऐसा हो सकता है कि फेल या तो नॉर्मल हो, लाइट हो या लाइटेस्ट हो, बट स्टिल उसके आगे कुछ ना कुछ लगा हुआ हो। दैट्स पॉसिबल। जैसे इस सजीदूनी के केस में, सॉरी तजीदूनी के केस में आपके पास नील इसके साथ अटैच्ड है, बट इट्स अ नॉर्मल फेल, इट्स नाइदर लाइट और लाइटेस्ट। तो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आपको नजर रखनी होगी, लेकिन नॉट टू डिटेक्ट द नॉर्मल लाइट एंड लाइटेस्ट, बट टू डिटेक्ट व्हाट वुड इट इफेक्टिवली मीन। ठीक है, अगर आप नी को कंसीडर ना भी करें, एज फार एज यू नो द फेल इज एंडिंग ऑन तजीदू, you would still be able to tell it's normal, light or lightest, ठीक, right? सही। अच्छा एक और था नंबर 9, लिया था सालू। जी अब ये अ, अब लाइट और लाइटेस्ट दोनों में सेम उसकी वो है। जी बिल्कुल। So because there is a lee and lee comes in both and you don't know right now which lee is this, Exactly. ये आपको कॉन्टेक्स्ट बताएगा, इससे पहले के अल्फाज या इसके बाद के अल्फाज। So right now you can mark it light slash lightest। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई एंड भाभी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? चलिए, आपका भी कोई क्वेश्चन है इसमें से तो आप यू कैन पुट फॉरवर्ड एंड यू कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। आई एम वेरी डिलेड। मैंने तो ये की नहीं थी, ये की होमवर्क नहीं है? था। अच्छा ठीक है। चले सही है, कोई बात नहीं, कर लीजिएगा इसको। आगे सर एक और है नंबर 10। ठीक, नंबर 10। जी ये वाली तफ। जी। अब हमने इसको अनश्योर थे बट नॉर्मल किया है। अच्छा, आप अगर इसमें अनश्योर थे और नॉर्मल किया है, तो अगर आप यू जस्ट लीव द फर्स्ट पार्ट, दिस वन, लीव दिस पार्ट। ठीक है, या से स्टार्ट होते हैं ना फेल, जी जी। या से, ता से। तो इफ यू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड यू ट्राई टू सी कि कौन सा फेल है जो कि इस सुकून पे एंड होता है। लाइटेस्ट होता है। लाइटेस्ट होता है ना? जी जी। लाइट भी नहीं होता और नॉर्मल भी नहीं होता, तो ये नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता, राइट? बिल्कुल। ये दिस जज़म इज गिविंग इट अवे दैट दिस इज लाइटेस्ट। पर लाइटेस्ट के लिए तो उसको ये मतलब ये जो 4 वर्ड्स हैं वो आने लाजमी नहीं है कौन से फॉरवर्ड्स? कि इन लम लमा ली जी जी। वो। सो अच्छा, हमने जो लास्ट टाइम वर्ड्स किए थे उसमें हमने ली तो किया था, लेकिन एक पॉइंट शायद मैंने आपको ना बताया, इफ आई एम फॉरगेटिंग, दैट ली इन द लाइटेस्ट कैन आल्सो कम एज वल एंड फल। ठीक है, कैन कम एज वल एंड फल। उसकी वजह ये है, अगर आपके पास ली लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने कई दफा इससे पहले कनेक्टर लगता है वाव विच इज जी जी। एंड, कई दफा कनेक्टर लगता है फा विच इज सो और देन। So when that connector comes in, for example, if this is the lam, if this is the lam written like this, and you put a connector, wow, wow is always coming with fatha. The wali doesn't sound well in Arabic. So what they do is they mute this lam. सही। Okay? So it becomes wal. It is still the lightest harf, but they mute it. So इसी तरह जब फा लगता है तो they also mute the lam. So जो lightest हर्फ में लाम है, that can come as ली, that can also ली, that can also come as fal, that can also come as wal. It's the same thing. अच्छा ठीक है,
ये शायद पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने ये पॉइंट आपको लास्ट क्लास में बताया कि नहीं बताया। अगर नहीं बताया, माय फॉल्ट। ये वाली जो एक्सरसाइज है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। इसमें आप देखें ये वल है। फिर तो इट ये इज नंबर 54 करें, क्योंकि हमने तो फिर सारे इस तरह नॉर्मल कर दिए ना। चल फिर नहीं, तो ये आपने तो latest- आपने नॉर्मल इसलिए कर दिए होंगे ना क्योंकि आपको ये पता नहीं है, लेकिन जी दैट एरर इज ऑन माय पार्ट कि मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन यू ऑल्सो शुड हैव कंसिडर्ड जज़म ना इन ये द एंड। हाँ, इसी जज्म lightest. की बेस पे नंबर 54 देखें। यही तो कंफ्यूजन थी फात भाई। हमने इसको भी अच्छा, नॉर्मल कर दिया, लेकिन अब लग रहा है कि ये भी लाइटेस्ट होना चाहिए। ये लाइटेस्ट है। Lightest है. ये लाइटेस्ट है और बिल्कुल है, क्योंकि इसके ऊपर जज़म है यहाँ पे। लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि इसके अंदर हर्फ कोई नहीं है, बिल्कुल। राइट। हम्म, लेकिन है तो ये लाइटेस्ट, क्योंकि अगर इसको नॉर्मल मार्क करेंगे तो इसका चार्ट कैसे प्रोड्यूस होगा नॉर्मल वाला, राइट। किसी चार्ट के किसी भी पॉइंट पे मैप नहीं करेगा, ना ये यंसुरु है, ना ये यंसुरानी है, हम्म, ना ये तंसुरुना है, whatever, right? बिल्कुल So you have not learned anything in the normal present tense that is ending with a sukoon. So it cannot be normal. सही। The closest thing you have learned is the lightest that ends with a jazm. और अगर आपको सस्पिशन है कि भाई इसके पहले तो हमें कोई वो हर्फ ही नजर नहीं आ रहा, but you still find the jazm, then you mark it as a lightest because that's your closest suspicion, right? सही। और कोई? अच्छा सर फात भाई सॉरी, अब हमने आपने कहा कि वल और फल जो है वो भी ली की फॉर्म है। जी अब ये वला और फला फिर नहीं है ना? नहीं, that's बस different. ठीक, That's different. सही। Um, जैसे 27 है, सॉरी जी वो है, एक्चुअली वला तुर जी हिक, बोलें 27। जी वला तुर हिकनी, जी this la is not that harf, ये is हाँ different, but this fail itself is lightest because there is jazm. Jazm. Sorry, तो not this जरूरी jazm, नहीं है कि फिर not वर्ड्स हों ही, हमने सिर्फ जज्म पे कंसंट्रेट कर ज्यादा लाइक जी jazm is telling you if it is lightest or not. ठीक। हम वर्ड्स लाइक ढूंढते ठीक रहे। है। वर्ड अब होगा तो लाइट टेस्ट होगा। जी turhiqni. Now there are two jazms here. Be careful. So this is a ni, which is pronoun, जी and this is ni, which is the fail ending. This is hikni, for example, kaf, this is fail ending. Because of this kaf, this is lightest, not because of this ni jazm, Knee. right? ठीक। So that's what you should keep in mind. अगर आप रीड थ्रू करें अपनी पिछले पेज को, उसमें ये फल और वल की एग्जांपल मौजूद है यहाँ पे, देखें, राइट। फल यस तजीबू, पढ़ा था इट ना। इज लाइटेस्ट। हाँ हाँ वल युमिनु, व्हिच इज लाइटेस्ट। ठीक है। ठीक। तो इफ यू वांट यू कैन इन फ्रंट ऑफ दिस यहाँ पे आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं फल एंड वल, इट आल्सो कम्स एज दैट। ठीक। ठीक है, जबरदस्त। और कोई क्वेश्चन? Full. नो फर्दर क्वेश्चन? आई थिंक वी क्लियर। चलें, if there is any further question you can always ask, as you know, ठीक है, there is no problem at all. अच्छा, अब मेरी assumption ये है कि you are comfortable with the fails, right, the charts. You are also quite okay with the normal and the lightest forms of the fail, the marfu, the mansub, and the lightest form was majzoom, not Majzoom. majroor. Majzoom, right? So you're comfortable with them. When I make fail lightest normal, you will not feel कि कुछ amazing सा हो रहा है जो मुझे नहीं पता, right? If we are on the same page, then I'll move you to the next topic today. ठीक है, thumbs up है जी thumbs up? ठीक है, चले, good है। Middle में. थोड़ा thumb tilted है कि सीधा है?
ये थोड़ा सा यूं हुआ है, Horizontal. है? चले अगर थोड़ा सा टिल्टेड भी है उसको सीधा पकड़ के कर देंगे इंशाल्लाह जब वक्त आएगा. इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू आर स्ट्रगलिंग विद, देन इंशाल्लाह विल फिक्स दैट ऑन द गो. ठीक है. जी. अच्छा, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने लगे हैं कुरान का, अरबिक का, एंड दैट इज द टॉपिक ऑफ कमांडिंग एंड फॉरबिडिंग. कुरान में कमांडिंग एंड फॉरबिडिंग बहुत एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होती है. ठीक है. तो वी हैव टू डू कमांडिंग एंड फॉरबिडिंग. अब फॉरबिडिंग से मैं स्टार्ट करूंगा, बल्कि मैं पहले आपको कुछ प्रिंसिपल्स बता देता हूँ. लेट्स टॉक अबाउट कमांडिंग फर्स्ट. Now, tell me, can you command somebody who is not present? No. No. So, somebody who is not present, which person is it? Third person, second person, or first person? Third person. Third Third. person. Third person. So, the principle is you cannot command in third person. ठीक है? Make sense? You cannot command in third person. तो good news, fail का third person out हो गया, छोटा हो गया चार्ट. सही. ठीक है. शीशे के सामने खड़े होके अपने आप को कमांड करता है कोई? नहीं. नहीं करता ना. नहीं Suggest करता ना. करते. जो करता है उसको कुछ और कहा जाता है. ठीक है. तो You डॉक्टर need बड़े to हैं यहाँ set पे, आपको words. पता होगा, उनको पता चल ही गया होगा मैं तो वो उसको कुछ और कहा जाता है. सो यू डोंट कमांड योरसेल्फ. डजंट मेक सेंस. ठीक है. समटाइम्स करते हैं, खुद को कमांड करते हैं चाय बना के लाओ, फिर खुद ही चाय बना के ले आते हैं। Command अच्छा. better आप है ना. How हाँ can जी. ये स्पेशली होता है जब पाकिस्तान से वापस आया ना बंदा, तो फिर ये होता है. अच्छा, वो जो जिसको कमांड कह रहे हैं ना, वो एक्चुअली मोटिवेट करना होता है. कम ऑन, बना लो चाय, बना लो चाय. नहीं बनाएगा आज कोई और, तो वो मोटिवेशन है. ठीक है. So you don't command in third person, you cannot command yourself. So what is out? First person. First person is out. first and the yeah. Good news. 6 pronouns बच गए. ठीक है. 6 pronouns बच गए. Can you command in the past? No. 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 You can't command in the past. So you cannot command in the past, meaning past tense is out. Congratulations. ठीक है. So Finally something. we're just talking about the 6 second person fails in present tense. अब वो पक्के नहीं हुए ना. वो ये जो 6 है ना, इसके ऊपर तो बहुत सारी, इस पे तो वलीमे की दावत बनती है. ये अगर ये वाली जो 6 नहीं है ना पक्के हुए हुए, इन 6 के ऊपर हम बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड पर्सन प्रेजेंट टेंस. ठीक है. Commanding and forbidding will take place in second person present tense. ठीक. Those are the 3 we need. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Right? अब ये प्रिंसिपल आपको क्लियर है, तो इसके बाद हम प्रोसेस पे जाएंगे. How to construct a command and how to construct forbidding. Let's start with forbidding. That is little easier in terms of process. टॉपिक्स ये दोनों बड़े आसान है, और आई मीन पर्सनली आई फाइंड देम वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है ना. आई होप यू डू एज वेल. व्हाट इज फॉरबिडिंग? घर में 50 दफा रोज होती है. To stop. जुनेद, नहीं. Simple अरबी forbidding क्लास में नहीं. ऐसे बोल दिया आपने. अरे रोज फॉरबिडिंग नहीं होती. अच्छा, रोज forbidding, मैं वही कह रहा हूँ ना. कमांड Every होती time. होगी, कोई काम रोज गलत कमांड करते होती ही होगी. नहीं है, हम कोई गलत काम करते ही नहीं तो what is forbidding? What is Stop. it? मना कर. Impermissibility, right? यानी when you stop somebody from doing something. ठीक है ना. उसकी परमिशन करना, फोरबिड करना किसी को. नाउ हमने फेल पढ़ा है यंसुरु.
means he helps. Okay, इसकी forbidding क्या होगी? Don't Don't help. help! Exclamation mark. Don't help. आप किसी को जब स्टॉप कर रहे हैं, राइट? सो इस डोंट हेल्प को प्रोड्यूस करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस. ठीक है, एंड वंस यू हैव नेल्ड डाउन दैट प्रोसेस व्हिच इज प्रीटी इजी, then you are able to produce command forbidding for almost every fail. Okay, so I'll teach you that process first. Yeah. The process has, I think, 2 to 3 steps. The step number 1 is whatever the fail is, bring it in the second person. Step number 1. जो भी उसका प्रोनाउन है, हर प्रोनाउन का एक काउंटर पार्ट है, हुआ का है, अंता एंड सो ऑन, राइट? सो ब्रिंग इट इन सेकंड पर्सन. ठीक है, मेक इट लाइटेस्ट. मजूम. ओके, सेकंड स्टेप. नाउ ये वाला लाइटेस्ट किसी हर्फ के साथ नहीं बन के बन रहा, ये ऐसे ही बन रहा है. ठीक है, एंड द थर्ड स्टेप इज पुट अ la before the fail. That's step number 3. ठीक, let's try it. Yansuru. What is the second person of Yansuru? Tansuru. Tansuru. How do I make it lightest? Tansur. Tansur. And then third step is put a la before it. La tansur. Don't help. And that's your forbidding statement. Okay. Let's try another one. Yansurani. Yansurani. Step number 1, bring it to the second person. What's the second person? Tansura. Tansurani. नहीं, Tansu? Tansurani is Tansura. the second. Tansurani. Second person is Tansurani, right? That's step number 1. Tansura. Step number 2, make it lightest. Right? Tansura. 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 Noon. Step number 3, put a la before it. La Tansura. La. Tansura. La Tansura. You both don't help. Both of you don't help. That's La Tansura. Okay. Yansuruna. Tansura. Yansuruna is not. ये भी second में ला. Yansuruna is the fail I'm giving you. Okay? We have to go through the process. Now, the first step is make it second person. Second person. Tansuruna. So that is Tansuruna, Tansuru. right? Then make it lightest. Tansur. Tansuru. Tansuru. Tansuru, right? And sorry, not known. And then put a la before it. La Tansuru. La Tansuru. You all don't help. Okay? You understand the process? अच्छा, अब आते हैं इसके ऊपर. यार बताया तो करे यार. अच्छा, यंसुरना. ठीक है, यंसुरना. ठीक है. Which pronoun is this? Third person. Third person. हाँ जी. It is the Third person. third person. कौन सा प्रोनाउन है? कॉन्फिडेंस से बताना है मुझे. Unna. उन्ना. इसीलिए पक्के कराए थे ना, इसीलिए कराए थे पक्के पिछली 500 क्लासेस में. यंसुरना. ठीक है, bring it to the second person. Tansur. Tansurna. Make it lightest, please.
तंसुर Same. Tansurna, ये नहीं Tansurna. change होता. Doesn't change. No, no. Doesn't change. Yeah. Tansurna. Same. Right? Yeah. Put a la before it. La तंसुरना tansurna. La tansurna. You all feminine, don't help. Okay? Yeah. एक और करते हैं. हमें करना है this one. Tansuru. Which pronoun can be inside this? हुआ. नहीं पक्की हुआ बात? से नहीं नहीं Tansurna. Oh, Yeah. sorry. नहीं इसमें she और तान दो है. तीन है. हाँ, She. it can be Tansuru. anything. It can be Anta. she, She. you. It can be she, Anti. which is here. Yeah. Anti. Is that Or the only one? Anta Can Here, be you. anti, Anta Or Anta. anta, right? Yeah. It can be here or it can be anta. Ant. Very good. Now, let's assume this is here. Okay? So what is the counterpart of here? तंसुरीना Tansurina. Everyone with me? Yes. Tansurina. Okay? Now, let's make it lightest. Suri. Tansuri. Tansuri. And then put the la before it. La Tansuri. You lady, don't help. ये वाला याद कर लें. रोज बोला करेंगे. आपको भाभी अभी कमांड याद कराता हूँ इसकी ऑपोजिट वाली. ठीक है? तो दोनों आप एंजॉय करेंगे. ठीक है. अच्छा, अब मैं एक समरी यहाँ पे करने लगा हूँ विच इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो. सो जो पहला फेल है वो है तंसुरु. वी आर डूइंग तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरूना, तंसुरीना, तंसुरानी, तंसुरना. दीज आर द 6 वी आर डूइंग. अंता अंतुमांतुम, अंति अंतुमांतुना. ला तंसुर अंता वर्जन. ठीक है. ला तंसुरा अंतुमा वर्जन. राइट. ला तंसुरु. Tansuru. ठीक है. ला तंसुरु इज द अंतुमा वर्जन. ठीक हो गया. ला तंसुरी अंति वर्जन. ला तंसुरा अंतुमा वर्जन. ला तंसुरना अंतुना वर्जन. These are the 6 forbiddings. ठीक है. The thing you should remember about them. Sorry. Okay. Endings को चेक करें. सुकून. Yeah. आ उ ई आ ना. 6 endings. सुकून आ उ ई आ ना. इस एंडिंग्स को राइम के साथ दिमाग में बिठा लें. सुकून आ उ ई आ ना. So when you find a fail that is ending with either सुकून आ उ ई आ ना, your mind should immediately go, is it forbidding or something else? ठीक है. Especially when you have a la before it, it is most likely to be forbidding or one of its classmates. There are fails that come with la and la, but they are not forbidding. We will do that later. ठीक है. तो forbidding की पहचान क्या है? You find the la and you find one of these 6 endings. सुकून आ उ ई आ ना. ठीक है. Take 30 seconds. Say out सुकून आ उ ई आ ना. सुकून आ उ ई आ ना. Just take your time. 30 seconds. Do it.
ओके अगर मैं आपको एक वर्ड दूं, इफ आई से दिस gazebo, is it a present tense? ठीक है, Yes. युकाजिबु कौन सा प्रोनाउन है ये? Yansuru. प्रोनाउन हुआ। यंसुर से तो मैच हुआ। करता है, हुआ। ठीक है, नाउ वी विल डू द सेम एक्सरसाइज इन आवर माइंड। ठीक है, we will create a forbidding of it using our mind. So first let's bring it in the second person. What will it become? Tukazibu. Let's make it lightest. What does it become? Tukazib. Let's put a la before it. La tukazib. Now that's the forbidding. La tukazib. Don't lie. Okay? Don't lie. Now we have learned the 6 endings. Sukoon, a, u, e, ana. So your 6 forbiddings from there, you can just produce with your mind. You can say la tukazzib, la tukazziba, la tukazzibu, la tukazzibi, la tukazziba, la tukazzibna. Sukoon, a, u, e, ana. If you know this, you just have to produce one forbidding for anta, and you can produce all of them without going through the process. You understand? So let's try to do this. The first one is la tukazib. The second one is la tukaziba. Third one, Atukazibu. who? Fourth, correct. Fifth, Ziba. and the last one, Ziba. zabardast. 6 forbiddings. 6 forbiddings. Okay. यशहदु यशहदु ठीक है, यशहदु क्या हुआ? फनी वर्ड है। वो ख्याल आ गया कि टेस्ट हो रहा है हमारा, है अभी तो टेस्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट देना है, आपको पता ही नहीं है। फिलहाल का पीटीएसडी है। यशहदु, let's try to produce the forbiddings one by one. Anyone who wants to produce anta version, तशहद not just tashhad, forbidding चाहिए पूरी मुझे। ला तशहद ला ला तशहद, तशहद ला ला तशहद, तशहदा ला तशहदु ला तशहदी ला तशहदा ला तशहदानी ला तशहदना, ओ सॉरी ला ला तशहद तशहदना। ठीक है, जबरदस्त, जबरदस्त। You get the idea. Anyone else wants to try the 6? Right or wrong doesn't matter. Just try. لا تشهد لا تشهدا لا تشهدوا لا تشهدي لا تشهدا لا تشهدنا. Very good, very good, very good. So you get the idea, and that's forbidding. ठीक है, कुरान में forbidding काफी जगह इस्तेमाल होती है. Let's do a random check कि शायद हमें कोई example मिले यहाँ पे. If I just search la, let's see if we can find anything. Otherwise, I'll look for some examples. इसको इस तरह ढूंढ लेते हैं, la and ta. ला युमिनून La yu'minuna is not.
I can see some, but they are little advanced. So I don't want to take you there. This अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. Let's try to do this detection. फला भी होगा शायद जी वो फला तजालू जी, फला हो सकता है. फला is just a connector, can come before the Yeah. la. ठीक है. But the important thing is ला यस्ताही इन अल्लाह ला यस्ताही. जी, this is also, but this is a little advanced. अच्छा, आप इसको देखें, ये वाला लिखा हुआ है ला तालमूना. Yeah. Is this forbidding? ला तजालू. Yes. No, No, sorry. Why is it not forbidding? Ending. Ending sound. Yeah. Because it's what majzoom, Mm. right? It is not. So what's the difference? ठीक है, वो देखते हैं. ठीक है, दो चीजें हैं. अगर मैं कहता हूँ तंसुरु, sorry, not tansuru. This means, in fact, if I say English में पहले बताता हूँ आपको. I think that will clear. If I say you help, full stop, and then I say you don't help, you don't have full stop, and then you don't help exclamation mark. What is the difference? एक statement Command है command. next one. एक सिंपल Exclamation. स्टेटमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, और एक फॉरबिडिंग है, राइट? सो द वन विद एक्सक्लेमेशन मार्क इज द फॉरबिडिंग. अरेबिक में पंक्चुएशंस नहीं होती, Mhm. right? So you can't reflect that through punctuation. You have to change the words, right? So in Arabic, when you are doing a forbidding, then you know you are doing la tansur. That's what we have learned. La tansur. This ending is telling you this is forbidding because it's combined with the la. If you do not make the fi'l lightest, and you just say la tansuru the way it is, and you don't change this ending, in that case, you are not producing forbidding, you are actually doing a general observation or a statement. Mhm. Okay? So it's a subtle difference, very, very small difference. Jazm versus a normal. The marfu fail versus the majzoom fail. And the meaning changes. Okay? So in that particular example, it is la ta'lamuna. It's a full form of fail. It is not forbidding. Although it is second person, it is present tense, but it is still not forbidding. Yeah, it just means you do not know. Full stop. Okay? Mhm. Clear? Yes. Forbidding easy है, difficult नहीं है. It's not a difficult topic. ठीक है? But it's a very important topic. अच्छा, अब प्लान ये है कि मैं आपको इसके बाद कमांडिंग सिखाऊंगा. ठीक है? कमांडिंग्स के बाद हम लोग अपना कोर्स वर्क जो है हमारा, उसकी लास्ट एक्सरसाइज पेज है, वो नोट्स वाली जो पूरी बुकलेट है आपकी, यू विल ऑलमोस्ट कंप्लीट दैट. ठीक है, दैट इज ऑल द फाउंडेशन ऑफ व्हाट वी वांटेड टू डू. उसके बाद हम लोग एक सेकंड लेवल ऑफ स्टडी में जाएंगे, जहां पे हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और बहुत सारी चीजें करेंगे. ठीक है, लेकिन उस पे जाने से पहले आई वुड वांट यू टू डू अ मिनी प्रोजेक्ट ऑफ योर ओन, छोटा सा. ठीक है, ताकि आप हर चीज को कंसोलिडेट करके एक जगह पे रिवाइज कर लें. ठीक है, बिकॉज व्हेन यू गो इनटू सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, थिंग्स विल स्टार्ट टू बिकम लिटिल कॉम्प्लिकेटेड अगर आप यहाँ पे फर्म नहीं है इन वाली फाउंडेशंस में, राइट? So if forbidding is clear, so let's do the commanding and take it from there. Commanding follows a similar pattern to forbidding, but एक दो चीजें हैं जो चेंज होती हैं कमांडिंग में.
So I will start with a different fail. So let's say I start with allama. Now allama means he taught. He taught. Okay. Let me change the fonts. Oops, sorry. He taught. ठीक है. हमने इसकी कमांड प्रोड्यूस करनी है. इसका प्रेजेंट टेंस है यू अल्लिमो. यू अल्लिमो. ठीक है. यू अल्लिमो इज द प्रेजेंट टेंस. आप एक्सपर्ट्स हैं फॉरबिडिंग प्रोड्यूस करने में, राइट? सो if you are asked to produce forbidding, you are taking it to the second person. You are making it tu'allimu, then you are making it tu'allim, and then you are putting a la before it. La tu'allim. La Don't tu'allim. teach. And from that point, you're producing 6. La tu'allim, la tu'allima, la tu'allimu, la tu'allimi, tu'allimi, la la tu'allima, tu'allima, la tu'allimna. tu'allim. ठीक है. यहां तक आपने अभी कर लिया. You producing, and this is all vocabulary. This is how you build your vocabulary. Okay? What's the difference in commanding? In commanding, the steps are as follows. Commanding also takes place in the second person only. So you make it the second person first. Okay, you make it tu'allim. Tu'allimu. That's the first step you have to take. Wait a second. Font मजे का नहीं है. ठीक है. ठीक है. तुअल्लिमु. Second person बना लिया. You go ahead and you make it lightest. What would it become? You all them. Volume. Yu'allim nahi, tu'allim. Oh, sorry. Yeah. Right? Sorry. Tu'allim. It will become tu'allim. Oh, Now, forbidding me, at this point, you used to stop. And you used to put the la before it. La. Right? Commanding me, you don't stop here. You actually go and you kill the ta. You remove the ta from the front. Okay? What would it become if you remove the ta? Allim. 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 Now, allim means teach. Teach. Okay? Now, this is a command form. Allim ke andar la, in command ke andar la nahi aata. La is about forbidding. La means no or not, right? Command is command. You need to do something about it. So, इसकी differentiation forbidding से इस तरह होती है कि you remove the ta that represents the second person. So when you look at allim, so मैंने इसको allimu लिख दिया. It's allim. Second, sorry. Allim. So when you look at this, in a first glance, you might think, if you think immediately, oh, it's a past tense. But it cannot be a past tense because it's ending with a sukun, So, right? That is a giveaway that this is a command. Okay. अब allim अगर आपने बना लिया है, you can produce the 6 commands just like you produce the forbidding because the ending is the same. The command would be allim, Lima. allima, allimu, Limu, allimi, allimi, allima, allima, allimna. 6 allimna. commands. Same 6 endings. Okay. अच्छा जी. अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं या अय्युहल लज़ीना आमनू आमनू या अय्युहल लज़ीना आमनू. What type of fail is this? This Present. Yeah. So Present. present light and antum. Amanu. प्रेजेंट टेंस है अगर ये तो कहाँ मैप होता है? Second person. Antum. Any present tense that ends with u like this.
नॉर्मल प्रेजेंट टेंस कोई एंड होता है ऐसे? नहीं। या तो लाइट बनाया गया हो Light. या लाइटेस्ट बनाया गया हो तो बात है। Yeah, ठीक है, light. अल्लाह Yeah. ताला कुरान में कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू मीनू। आमनू आमीनू। Oh, those who believed. Ya ayyuhallazina is oh those who. Okay. Believed. Believe. Exclamation mark. Believe. Oh, those who believed, believe. Now the first one is a past tense, the second one is the command. Okay. First one is past tense, the second is command. और आप देखें कमांड किसको इशू की जा रही है? Those who believed. उनको अल्लाह ताला कहते हैं believe, start believing now, right? तो दिस इज, मैं आपको ये दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी सटल डिफरेंस। ये एक सेंसिटिविटी जो है ना अरेबिक लैंग्वेज में, ये आपको बिल्डअप करनी होगी ताकि आप इनको डिफरेंशिएट कर सकें। इट विल कम ओवर टाइम, इट्स नॉट गोना कम इमीडिएटली। I'll give you another fail and let's see if you can produce a command yourself. So if I give you, let's say I'll give you this one, similar one. Fahad bhai, जी sorry, question. जो जी previous वाला था, जी जी। Amanu is, why can't it be the lightest form of anta, antum? Antuma, sorry. Lightest form of ये जो antuma. पहला वाला Amanu है. अलिफ पे Um, नुक्स होगा। उसकी अलिफ के रीजन ये साथ है, उसकी रीजन ये है कि आमन, दिस इज दिस फेल, आमना, oops, the fail is this, amana, this is the past tense, amana, the present tense is yu'minu, yu'minu, ठीक है, present tense is yu'minu. So if you take yu'minu to second person, you Yu'min. become tu'minu, right? Oh, sorry, Second tu'minu. person, you become tu'minu. You take tu'minu to antum version, you become tu'minuna, right? Tu'minuna. You make the tu'minuna lightest, you become tu'minu, right? Correct? Okay. Say. So this is me and this is ma. But if you pick up amana and you say amana, amana, amanu, right? Past tense. Right. You see that? Yes, yes. That's why it's a past tense. ठीक? Yeah. अब देखें, many times the commands would look very similar to past tense. There are some fails जिनकी commands actually exactly past tense से ऐसी भी लगती हैं, and only context tells you that if it is a command. Okay, so let's try to produce a command for this one. जी जी जी। अब आपने कहा आमनु, आमनु का प्रेजेंट जो है वो यो मेनू है, जी। तो ये आमिनु फिर बिलीव कैसे है? सॉरी, जो आमीन, आमीन ये सेकंड because अब इस तुमिनु, this is a little advanced fail, ये तुमिनु तक आप पहुंच गए, right? जी। And what you do when you're making a command, you remove the ta, right? Yeah. You remove the ta. So in this particular, ये आपने नहीं पढ़ा हुआ, मैं आपको बता देता हूँ. When you remove the ta, you are left with this. You know, you're left with this. Can you read this?
because there is a sukoon on the waw. मीनू हो जाएगा. You can't read this word, right? So ये एक क्लास ऑफ फैमिली है फेल के अंदर, जो कि जब कमांड में ट्रांसफॉर्म होती है, इसके बिगिनिंग के अंदर हमजा लगता है इस तरह करके. ठीक है, ये आपने भी नहीं पढ़ा हुआ. सही. और इसका फर्स्ट रूट लेटर भी हमजा होता है. तो जब टू हमजास कम टुगेदर इट बिकम्स अलिफ मद. दिस लिटिल एडवांस, ये थोड़ी सेल्फ स्टडी है, तो हमें आगे जाके करनी पड़ेगी. ठीक है, फ्रॉम देयर दिस कमांड कम्स इन. ओके, अभी टेंशन ना लें उसकी, डोंट वरी अबाउट इट. अभी टेंशन लेंगे गोलियां खानी पड़ जाएंगी, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे. डोंट वरी अबाउट इट. सही है. अब हमें तअल्लमू, मैंने आपको एक फेल दिया. तअल्लमू का मतलब ही लर्नड. ओके, I want the first command of this. Now this is, sorry, what I will give you is this. Actually the fail is this one. Wait. Yata'allam. This is the fail. Yata'allam. That is the fail. He learned. अब सबसे पहले आपने माइंड में इसको सेकंड पर्सन में लेके जाना है. क्या बनेगा? Tata'allam. ततअल्लम. ये जो सेकंड था आपको कंफ्यूज कर रहा है ना, इसको इग्नोर करना है आपने. ठीक है, you just focus on the ya beginning and u ending. ठीक है, it becomes yatata'allamu. ठीक है, tata'allamu. Now make it lightest. Yata'allam. Tata'allam. Sorry. Tata'allam. Yeah. Tata'allam. And now remove the ta. ताल्लम. Tata'allam. Ta'allam. Here's your command. Learn! Exclamation mark. Now from this सही पहले ये ताल्लम है या तालम. हाँ सब. ta'allam. ठीक है. Now from this point produce the 6. ताल्लम मा تعلم ताल्लम تعلما ताल्लमा تعلموا ताल्लमना. تعلمي تعلما تعلمنا. Very good. ta'allamna. हरका मेंटेन करें, फतहा को ta'allam. कचरा नहीं करना. ठीक है ना. ta'allam, ta'allama, ta'allamu, ta'allami, ta'allamna. ठीक है. 6 commands. It is a skill that is amazing. ठीक है, once you built it. Now I will tell you little bit of a complexity of a command. जो आपका सबसे फेवरेट फेल है, कौन सा वाला है? Nasara. नसरा यंसुर. बिल्कुल, इसी ने आपकी लाइफ को थोड़ा सा मुश्किल बनाना है. ठीक है, बड़ी दोस्ती थी ना आपकी इसके साथ, देखते हैं कितनी दोस्ती निभाते. अब इसको आपने सेकंड पर्सन में लेके जाना है. ठीक है, तंसुरु हो गया. تنصروا. इसका आपने लाइटेस्ट फॉर्म बना लेना है. राइट, Ansur. تنصر. तंसुर. उप्स, तंसुर. इसका आपने ता रिमूव कर देना है. ठीक है, पढ़ के दिखाएं. ये अंस नहीं चलेगा. आंसर तो नहीं होने वाला. नहीं Ansur. होने वाला. जब आप ऐसे प्रॉब्लम में फंसे, when the beginning is starting with sukoon, you cannot read that word. So you need to give a crutch to that word. एक stick देनी पड़ती है आपको उसको. ठीक है, and that stick is the alif. ठीक है, whenever the command आपको एक ऐसे फेज में ले जाए कि जब वो सुकून से स्टार्ट हो रही है, then you have to give a stick to that word. ठीक है, so it can walk, you can read it. उसके बाद क्वेश्चन आता है कि इस अलिफ के ऊपर फतहा आएगा, इसके ऊपर दम्मा आएगा, कि इसके ऊपर कसरा आएगा. क्या चीज आएगी? कसरा. फतह. डिफरेंट हो जाएगा. जो दिल चाहेगा कुछ भी डाल देंगे. इसके ऊपर भी सुकून डाल के, इसके ऊपर भी सुकून डाल के एक और क्रच दे देंगे. याद करना आसान हो जाए, कुछ डिफरेंट हो जाएगा.
अब मैं इसकी टेक्निक आपको बताता हूँ, ठीक है? इसकी टेक्निक क्या है? इसकी टेक्निक ये है कि आपको इस फेल का हुआ वर्जन पता होना चाहिए, ठीक है? आपको पता है यन शुरू है, चले हुआ नहीं भी पता आपको इसका अंता वर्जन पता होना चाहिए, ठीक है? You should be able to take it back where it was. So what you are looking for is basically the second last root letter of the fail before it gets the endings. मैं थोड़ा सा इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ. आपको पता है कि इसका जो फेल हुआ वर्जन है, दिस इज यन शुरू. नाउ in this case yan suru was the ending, right? So the second last letter is sod. Okay, now if you make this fail like this, yan suruna, now still this part is the ending, the entire thing. Okay, this part is the ending, and we combined it with ra. We said ra plus una is going to be telling us what is the pronoun inside it, right? That's how we did it. So you will ignore this and you will still go this root letter. So this is the second last letter of the fail, ignoring the ending. आपको ending से पता चल जाएगा this is not part of the fail. उसके से पहले जो लेटर आ रहा है that is part of the fail, और उससे पहले वाला लेटर, इसका हरका चेक करना है आपने, ठीक है? सेकंड लास्ट लेटर का, और उसका रूल सिंपल है. इफ द सेकंड लास्ट लेटर, जो कि आपको एक्चुअली बाय प्रैक्टिस आप देखेंगे यहां पे भी नजर आ रहा है सामने, ठीक है? If this haraka is a dhamma, you put a dhamma on it. Unsur. If it is not a dhamma, then you put a kasra on it, regardless whatever it is. कमांड की बिगिनिंग या तो दम्मा पे होगी या कसरा पे होगी, ठीक है? फतहा से नहीं होगी. And only in special cases जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है? 99% of the fails will start with dhamma or kasra when it comes to command, ठीक है? Now ये we वैसे still have, तजवीद का भी यही रूल है ना, अगर अलिफ के ऊपर ना हो तो आप थर्ड वर्ड को देखते हैं या फिर कसरा करते हैं. जी, अगर आप सुकून के बाद अगर अलिफ आता है तो आप सुकून पे कसरा लगाते हैं हाँ जी. पढ़ते हुए भी, and that's also a grammar rule. Zahaba, या zahaba, yazhabu, I believe. Yazhabu means he goes, ठीक है? I want to make a command, ठीक है? I want to make a command. So command would be tazhabu, step number 1. Tazhabu, and then I make it lightest. Tazhab, and then I move the ta. So I end up in the same situation. ठीक है? जी, तो you don't have you don't have the ability to read this because it's sukoon in the beginning. ठीक है? So what you do is you go back and give it a crutch, alif. या इस होगा या उस होगा. ठीक है? And now what haraka should come? Should it be uzhab or izhab? फतह नहीं, फतह तो हो नहीं सकता. इज़हब. It should be izhab because the second last letter is fatha. Only if the second last letter is dhamma, it will take the dhamma. Okay? There is a fail, very famous fail, yaqulu. Yaqulu, like this. He says, let's produce the command. Taqulu,
تقول تقول. Then we make it lightest. تقول تقول تقول. ठीक है? And then you remove the ta. أقول Cool. Yeah. So, أقول It's cool, isn't it? cool It's very cool. So what is the problem? अभी आपने ता तो हटा दिया, you can still read the beginning, but as soon as you reach the ending, you find a two sukoon problem again. You find a two sukoon problem. Two sukoons cannot come together. They can't come together because they make the word unreadable. Okay? So when that happens, remember these two letters. Remember a ya and remember a waw. These are weak letters in Arabic. So whenever they have to fight for their place, they lose. So when you have two sukoon problem, the waw is dropped. And that's where the kul hu Allahu ahad comes. Okay? This is kul. Say. It's a command. Okay? Kul hu Allahu ahad. Say he is Allah the one. Okay? It's a very interesting subject. Yeah. It's not very difficult. It takes one or two classes to just get completely comfortable with it. But once you're good at it, then you're good at it. So iski bhi 6 commands aap produce kar sakte hain. Kul, kula, kulu, kuli, kula, kulna. Izhab, izhaba, izhabu, izhabi, izhaba, izhabna. Unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. ठीक है? It's an amazing skill to build. सही है? तो ये जो टर्म ब्रेक है, इसके अंदर कोशिश करें कि थोड़ा सा इसको मॉनिटर कर लें जरा. मैं आपको ये पेज दिखा देता हूँ. आपका पेज नंबर 49 जो है आपका, इस पे सब कुछ मेंशन्ड है, सारी assumptions जो हमने आज की हैं. ठीक है? इसके अलावा फॉरबिडिंग का फॉर्मूला ला प्लस सेकंड पर्सन लाइटेस्ट. दैट्स द फॉर्मूला फॉर फॉरबिडिंग. ठीक है? एग्जाम्पल्स कैसे होती हैं, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मौजूद हैं. ठीक है? हमने ये भी देख लिया कि एक स्टेटमेंट और एक फॉरबिडिंग में क्या फर्क होता है. दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज लाइटेस्ट. राइट? बोथ हैव ला बिफोर देम. ठीक है? And then we moved into the commanding. This entire process you have done today. ये आपके पास सब नोट्स में लिखा हुआ है. ये प्रोसेस भी लिखा हुआ है. So you had tazhabu, you make it lightest, become tazhab. You remove the ta, it becomes this and becomes unreadable. So you give it a helper alif, and then you determine the haraka, and the ha gives away. This is going to be a kasra. ठीक है? Same example with यंसुरु, बट इन्होंने अंतुन्ना के साथ किया है. बस तंसुरना, you make it lightest, it remains the same. You remove the ta, it becomes this. You can't read it. You give it a helper alif, and then you find the haraka. And the second last letter says it's u, so therefore you put the u. Unsurna. ठीक है? एंड ये वाला फेल ततअल्लमा हमने किया था, इन्होंने ततअल्लमीना आपको दिया है, सेकंड पर्सन की अंति फॉर्म. ठीक है? दैट्स व्हाट इट इज. वंस यू आर डन विद दिस, दिस इज द एक्सरसाइज फॉर योर प्रैक्टिस. इफ यू कैन डू इट as much as you can. It's all about identifying what is command, what is forbidding, and what is observation. Okay? If you can do it, do it. If you won't be able to do it, we'll do it in the class next time. ठीक है? और उसके बाद आपका बेसिकली ये लास्ट पेज है इस कोर्स वर्क का, जिसके बाद ये सारी आयत हम लोग इंशाल्लाह एनालाइज करेंगे. एंड आफ्टर दैट विल डू अ मिनी प्रोजेक्ट जस्ट टू ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर. उसके बाद जो हमारी स्टडीज होंगी, दे विल नॉट बी
कोर्स वर्क ड्रिवन, दे विल बी टॉपिक ड्रिवन। ठीक है, तो मैं जनरली बैना ड्रीम का करिकुलम ही फॉलो कर रहा होता हूँ। ठीक है, विल गो थ्रू द सेम करिकुलम, बट यू वोंट हैव हैंडआउट्स लाइक दिस। ठीक है, लेकिन जो भी हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं, या शेयर ड्राइव में मौजूद है, बाय द वे, इफ यू डोंट नो, इट्स ऑलरेडी देयर, सो यू कैन जस्ट पिक इट अप फ्रॉम देयर। ठीक है, सही। चले, और चलिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी Thank मच, you. आई होप इट हेल्प Thank यू। you, Bob. इंशाल्लाह Good विल सी नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, Assalamu अल्लाह हाफिज। alaikum.